Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to International Islamic University Islamabad School's Sahiwal Campus online lectures. Dear students, this is the lecture of English grade 3, unit number 12, and the name of this unit is Account, the Children's Library. Dear students, this is the second lecture from this unit. In the previous lecture, we covered the reading and explanation and the word meanings of this lesson. I gave you the pronunciations, explanation and meanings of the new words from this lesson, and you people have written all the meanings in your notebook. I asked you as your homework that you are required to learn the meanings of words. I hope you all have learned. In this lecture, we are going to move towards the exercise of this unit. For every unit, the exercise has question answers as its first part. So of course in this lecture we are going to cover the questions and answers of this unit. On page number 67 the questions are given from this unit, but before we begin, just make sure that you have your English students book, English classwork notebook and your complete stationery with you. Listen to the teacher attentively and write down the stuff asked by your teacher in your notebook. Note down the points that you don't understand and wait for the discussion session. Dear students, आपने क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स बुक पेज नंबर 67 पे गिवन है, इसलिए आप स्टूडेंट्स बुक पेज नंबर 67 ओपन कर लें. आपने क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक पे लिखना होते हैं, इसलिए आप अपनी इंग्लिश क्लास वर्क नोटबुक भी ओपन कर लें और इंग्लिश क्लास वर्क नोटबुक का क्लास वर्क पेज प्रिपेयर कर लें. उस पर डेट, डे और टॉपिक राइट कर लें. The topic is account and its today's subtopic is questions. As you always prepare your index of your notebook, so please prepare it now for today's lecture. Come to the page number 67 of your students book where the questions are given. Dear students, इन questions को understand करने में और इनका आंसर देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, I hope, क्योंकि आप ये लेसन पढ़ चुके हैं और मैं ये लेसन आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो आई होप यू विल बी easily able to answer all these questions. I will also give you the solution of these questions. You will write answers and questions in your English classwork notebook as you always do. Okay, open your page where you will do the classwork of today's lecture and write down the first question with your lead pencil. Question number 1 is, what did Tahir and Kiran see children doing in the library? Pause the video and write down the question. Okay, remember that when Kiran and Tahir went to the library, they saw there too many children doing something. What were the children doing? Yes, you can easily find the answer on page number 66 in the beginning of the lesson, where it is described that children were choosing books. Some of the children were finding books from sitting on tables, and some children were using computer. So exactly the same is answer of this question. Write down the answer in your English classwork notebook, and the answer is, they saw children reading books and using computer. Dear students, whenever you need to write down anything on your notebook, pause the video and write it down and then replay the video. Similarly, if you don't understand something, you need to listen and try to understand the thing again. Replay the video and listen it again. You can rewind the video and listen the part that you missed or you didn't understand. आप वीडियो को रिवाइंड करके चीज़ें दोबारा सुन सकते हैं ताकि आपको उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. इसे भी अपनी नोटबुक पे लिखें. एंड क्वेश्चन इज़, इन विच सेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी कैन यू फाइंड स्टोरी बुक्स? Okay, dear students, in this lecture we learned about the fiction and reference section.
two sections of the library, and we learned that in the fiction section we can find the composition, the imaginary things, and the compositions those are not realistic. And in reference section we can find the information and realistic things. So you can now easily think that where can we find the storybooks? Yes, of course we can find the storybooks in our fiction section. Write down the answer, and the answer is in fiction section we can find storybooks. Come to the question number 3. Write down this question, and the question is, why do children use the computer? Do you remember Salman told Tahir that they use computer to look things up on internet? It helps them in their schoolwork. Similar is the answer of this question, that children use computers to look things up on internet. Okay, now come to the question number 4. Write down this question, and question is, how can you borrow books from the library? Yes dear students, आप लाइब्रेरी जाते हैं, आप वहाँ से बुक लेके बैठ के पढ़ सकते हैं, और अगर आपने लाइब्रेरी से वो बुक घर लेके जानी है, बोरो करनी है, तो आपको क्या करना होगा? Yes, we already have learned in the previous lecture that we will have to be a member of the library and have membership of that library to borrow the books for 2 weeks. So the same is answer of this question, that you can borrow books by having the membership of library. Write down this answer in your notebook. Come to the next question, which is question number 5, and you really don't need to write this question in your notebook. आप ये वाला क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आपने करेक्ट ऑप्शन को अपनी बुक पे ही मार्क करना है. सो आप ये क्वेश्चन नोटबुक में नहीं लिखेंगे. एंड द क्वेश्चन इज़, अ लाइब्रेरियन इज़ अ पर्सन हु. ए ऑप्शन इज़ बोरोज बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी. क्या लाइब्रेरियन वो होता है जो लाइब्रेरी से बुक्स बोरो करता है? ऑप्शन बी इज़ हेल्प्स चिल्ड्रन विद देयर स्कूल वर्क. क्या लाइब्रेरियन बच्चों का स्कूल वर्क में उनको हेल्प करता है? सी ऑप्शन इज़ लुक्स आफ्टर द बुक्स इन द लाइब्रेरी. क्या लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में बुक्स को लुक आफ्टर करता है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, विच इज़ लुक्स आफ्टर द बुक्स इन द लाइब्रेरी. लाइब्रेरियन वो होता है जो लाइब्रेरी में रहता है, लाइब्रेरी को मैनेज करता है, उसके पास बुक्स का रिकॉर्ड होता है. जिस किसी ने भी मेंबरशिप लेना होती है वो लाइब्रेरियन से कंसल्ट करता है. लाइब्रेरियन बुक्स इशू करता है और रिकॉर्ड रखता है कि किस स्टूडेंट ने कब बुक्स ली थी, और वो उसे इन टाइम रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ उसे पे करना होगा. ये सारे जो काम हैं वो लाइब्रेरियन करता है. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. Mark it, tick on your book. Now come to the question number 6. Write down this question in your notebook. And the question is, why is it important to be quiet in the library? Dear students, I already have explained you while we were reading this lesson that it is very important to be quiet in the library, to be silent in the library, because if we speak and if we talk to each other in the library in a loud voice, it will make a disturbance. So disturbance को avoid करने के लिए हमने library में quiet रहना होता है. The same is the answer of this question, that it is important so not to disturb other people in the library. Write down this answer in your notebook. Okay, I hope you all have understood and written all the answers in your notebooks. Dear students, as this was your classwork, so it will be checked properly by your teacher. So make sure that you are doing your classwork very neatly and not making it rough and not drawing anything on your notebook. Avoid to make your notebook rough and fuzzy. Just write down neatly everything, because teacher will check it, and follow the instructions properly. Now I will give you the homework for today's lecture. We covered in this lecture the question number 1 till 6, and the last question is remaining.
last question, question number 7 is assigned to you as your homework. You will write the question and its answer in your English homework notebook properly by writing date and day on the top of the page, and writing the index of your homework notebook properly. And the question is, what would you most like to do in the library? Why? Okay. uh, this question has two sections, and the first section is asking you that what would you like to do in the library. अगर आप लाइब्रेरी में जाएं तो आप सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद करेंगे? क्या आप स्टोरी बुक पढ़ेंगे? क्या आप कोई हिस्ट्री बुक पढ़ेंगे? क्या आप कंप्यूटर यूज़ करना पसंद करेंगे? या आप अपना स्कूल वर्क के लिए हेल्प लेने के लिए लाइब्रेरी विज़िट करेंगे? आप क्या करना चाहते हैं सबसे ज़्यादा, क्या पसंद करेंगे, ये आपने लिखना है। और फिर सेकंड सेक्शन क्वेश्चन का ये कह रहा है वाई। वाई का मतलब ये है कि अब आप वो जो चीज़ आप पसंद कर रहे हैं लाइब्रेरी में करना, आप वो क्यों कर रहे हैं, आप उसकी रीज़न देंगे। इसका आंसर बिकॉज के साथ स्टार्ट होगा, क्योंकि आप कोई रीज़न दे रहे होंगे। राइट डाउन द क्वेश्चन एंड आंसर इन योर इंग्लिश होमवर्क नोटबुक नीटली एंड प्रॉपरली. इट विल बी checked by your teacher. Second homework is from your English workbook, page number 46 and 47. Please open your English workbook, page number 46. Here exercise 1, 2, 3 and 4 are assigned to you as your homework. एक्सरसाइज 1 में आपने ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देने हैं. ऊपर एक बॉक्स में जो कंटेंट लिखा हुआ है वहाँ से देख के उसको आपने रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, और फिर आपने इसकी जो एक्सरसाइज है वो फिलअप करनी है. अब ये इस बॉक्स में क्या बताया हुआ है? इस बॉक्स में बताया हुआ है कि नाउन्स और वर्ब्स का डिफरेंस. जैसा कि लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन एक नाउन है बिकॉज वो एक पर्सन है ना. इसी तरह लाइब्रेरी भी एक नाउन है क्योंकि वो एक प्लेस है. और लाइसेंस वो भी एक नाउन है क्योंकि वो एक चीज़ है, कोई डॉक्यूमेंट है. और इसी तरह लाई मतलब झूठ बोलना, ये एक एक्शन है तो ये एक वर्ब होगा. ये पूरी एक्सरसाइज नाउन्स और वर्ब से रिलेटेड है. आपने इसको फिलअप करना है. उसके बाद पेज नंबर 46 पे आ जाएं. यहाँ पे एक्सरसाइज 2 है जो कि एक पज़ल है. आपने इसमें से वो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जो ऊपर बॉक्स में गिवन है. उसके बाद एक्सरसाइज 3 में आपने ये देखना है कि राइट वर्ड्स एंडिंग इन DGE. DGE साउंड्स ज. DGE sounds j. For example, a word is fridge, FRIDGE. Here in the end the sound DGE sounds j. FRI free, DGE j, and it makes fridge. आपने क्या करना है? EDGE के साथ आपने वो वाले वर्ड्स लगाने हैं जो EDGE के साथ एंड होते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास एक लाइन बनी हुई है उसमें आपने वो वाले वर्ड्स लिखने हैं जिनके एंड पे GE साउंड आता है. एक्चुअली DGE और GE इनके साउंड सेम है, साउंड दोनों की ज है, लेकिन इनके स्पेलिंग्स में डिफरेंस है. आपने इन दोनों लाइंस में वो वाले वर्ड्स लिखने हैं जो DGE और GE के साथ आते हैं. उसके बाद एक्सरसाइज 4 पे आ जाएं. वहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है. कुछ वर्ड्स हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं और आपने उन वर्ड्स को कंप्लीट करना है, उनके स्पेलिंग्स को DGE या GE के साथ. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज़ टू बी डन एज योर होमवर्क. इफ़ यू फाइंड एनीथिंग डिफ़िकल्ट यू कैन आस्क योर टीचर थ्रू WhatsApp, or you can wait for the discussion session. This is the end of today's lecture. Good luck, dear students. Get your homework done by the next lesson and follow all the given instructions properly. Note down the things that you find difficult and wait for the discussion session. Good luck. Allah Hafiz.